और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। मेंढर में लगातार ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हैं। मेंढर के मेन बाजार से हकीम मोड़ तक ट्रैफिक जाम है। और एक और अहम खबर की शुरुआत हम करेंगे, वो है G20 से। दिल्ली में G20 सरबराही इजलास का आगाज हो गया है। इसका पहला सेशन 1:30 बजे तक जारी रहा, दूसरा सेशन 3 बजे से शुरू हुआ। इजलास के पहले सेशन में आलमी रहनुमाओं ने एमिशन रिडक्शन और मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले चैलेंजों से निपटने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। तरक्की पजीर ममालिक का इस्तदलाल है कि अमीर ममालिक को कार्बन में कमी के लिए ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसमें कमी करने के लिए जरूरी इकदाम करने की जरूरत है। इजलास में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, UAE सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, अमेरिकी सदर जो बाइडन और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म समेत दुनिया के सरकर्दा रहनुमा शरीक रहे। एक्सेलेंसी, औपचारिक कार्रवाई शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास,
एक भरोसे में बदले। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड ने मोदी बाइडेन मुलाकात पर कहा कि दहशतगर्दी के मुद्दे पर दोनों ममालिक राब्ते में हैं। दहशतगर्दी को रोकने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में G20 से जुड़े कुछ प्रोग्राम में कुछ मुल्कों के एतराज जताने पर उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सामने तहजीबी और सकाफती तनव्वुर को पेश करना चाहता है और भारत और अमेरिका तनव्वुर का एहतराम करते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मार्गरेट मैकलॉड हैं, जो कि अमेरिकी विदेश विभाग की हिंदी प्रवक्ता है, हिंदुस्तानी प्रवक्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़18 से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल ये, G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, यहाँ पहुंचकर आपने अरेंजमेंट्स और भारत की जो प्रेसिडेंसी है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत स्मूथ है। इंडिया अपना विविधता पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। अरेंजमेंट्स कैसे लगे आपको यहाँ पे पहुंचने के बाद? जो भारत मंडपम है या इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है, अरेंजमेंट्स में क्या कहेंगे आप? हाँ, ट्रैफिक बहुत कम है, हैरानी हुई। और ये सेंटर मेरा मालूम नहीं कि आपके कैमरा दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े और बहुत अच्छे सुविधाएं हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात हुई, काफी लंबी मुलाकात चली, तमाम इश्यू से बात हुई। तो क्या आतंकवाद के मुद्दे पर भी कल चर्चा हुई? क्योंकि कहीं जॉइंट स्टेटमेंट में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन आतंकवाद एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर दोनों देश बातचीत करते रहते हैं और उसके खिलाफ वो एकजुट भी है। तो क्या आतंक के मुद्दे पर कल चर्चा हुई? हम इस मामले और बहुत सारे मामले के बारे में राब्ता रखते हैं और मेरा ख्याल में अमेरिका और इंडिया इस मामले पे खास करके मालियाती वसाइल बंद करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं और हम ऐसे कम्युनिकेशन में रखना चाहते हैं। एक अहम सवाल ये भी है कि G20 जो समिट है, इससे पहले जब प्रेसिडेंसी मिली थी भारत को, तो इसके जो इवेंट्स थे ये पूरे देश में कराए गए, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, लद्दाख भी शामिल है, लेकिन कुछ कंट्रीज को ऑब्जेक्शन था कि जम्मू कश्मीर में नहीं होना चाहिए, लद्दाख में नहीं होना चाहिए। आपका क्या व्यू है? मैं खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकती वर्किंग ग्रुप्स में, लेकिन जाहिर है कि इंडिया अपने मुख्तलिफ पहलू दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हम अमेरिका भी एक ऐसा देश है जिसमें विविधता बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है और मेरा ख्याल में कि किसी हद तक ये तो हमारा एक शेयर्ड वैल्यू है कि हम डाइवर्सिटी वैल्यू करते हैं। तो जिस देशों का ऑब्जेक्शन इस पे है, उन पे क्या कहेंगे? जो ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि J&K में नहीं होना चाहिए, लद्दाख में नहीं होना चाहिए, उन पे क्या कहेंगे? हम देखते हैं कि वो क्षेत्रीय कशीदगी एक बाहमी मामला है और उम्मीद है कि बात करके इंडिया और पाकिस्तान खुद ब खुद रिजॉल्व कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल जो सब लोग जानना चाहते हैं, आपने हिंदी कहाँ से सीखी? इतनी खूबसूरत हिंदी आप कैसे बोल लेती हैं? बहुत धन्यवाद। हमारे विदेश सेवा इंस्टीट्यूट इदारे में और यहाँ के सहेली और सहयोगियों से और उत्तराखंड में भी एक बहुत अच्छे स्कूल है जो लंडूर में है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलॉड। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ शैलेंद्र वांगू, News18 नेटवर्क, नई दिल्ली। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में फौज की डुग्गर डिवीजन की जानिब से 2 रोजा गुलमर्ग फेस्टिवल का आगाज किया गया। टनमर्ग से तिरंगा रैली से इस फेस्टिवल की शुरुआत की गई। डुग्गर डिवीजन के GOC ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। गुलमर्ग में आज पहले दिन मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। इस शानदार फेस्टिवल में बॉलीवुड के मशहूर अदाकार विकी कौशल और दूसरे फनकार भी शिरकत करेंगे। फेस्टिवल में सूफी म्यूजिक होगी, मिनी मैराथन होगा, हॉर्स रेस होगी, रूफ डांस, ATV रेस और दीगर प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि गुलबर्ग में टूरिज्म को फरोग देने के लिए और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को गुलमर्ग की ओर राग़िब करने के लिए इस तरह के फेस्टिवल यहाँ मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसमें बड़ी तादाद में मकामी लोग और सयाह शिरकत कर रहे हैं। को पता है ये गुलमर्ग एरिया जो है पूरा डिपेंड करता है टूरिज्म के ऊपर, तो इससे क्या होता है, इससे हमारा टूरिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, हमारा ही फायदा है। जितना टूरिस्ट बढ़ेगा उतना फायदा हमारा है। आप देखा है गुलमर्ग पूरा बुकिंग रहती है। अब यहाँ पे ये होगा, जब ज़्यादा टूरिस्ट बढ़ेगा तो लोगों के घरों में भी टूरिस्ट रुक सकते हैं, उससे भी हमारी इनकम बढ़ सकती है। सर जी, हम तो इसका हिस्सा बने हैं, लेकिन सर हम तो खुद परेशान हैं अभी, क्योंकि पिछले 2 महीने से हमारा काम जो पड़ा है वो पूरा ठप पड़ा है।
हम शुक्रगुजार है आर्मी के सीओ के साहब को, इसने यहाँ पर ये जो प्रोग्राम रखा है, इसकी वजह से टूरिज्म आगे से बढ़ेगा सर यहाँ पर, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से जो है हमारा पूरा काम बंद पड़ा हुआ है सर। जी जी जी, हमारे तो बहुत खुशी है सर, आज हमने इसमें हिस्सा लिया, हम तो इसमें बहुत खुश है सर। हम तो चाहते हैं और भी ये प्रोग्राम यहाँ पर बढ़ने चाहिए, टूरिज्म बढ़ाना चाहिए सर यहाँ पर। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम, मैं हूँ मुनीर हुसैन हुर्रा, और आज आर्मी की जानिब से, जो फौज की डिगर डिवीजन है उनकी जानिब से गुलमर्ग फेस्टिवल का आगाज हो गया है। जीओसी ने टंगमर्ग से ही तिरंगा रैली से इसका आगाज किया है, हरी झंडी दिखाकर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और ये रैली है और ये टंगमर्ग से बराबर गुलमर्ग पहुंचेगी ये रैली। और इस तरह डिगर डिवीजन के जो जीओसी है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इसका जो बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया है, आगाज किया है। आप देख सकते हैं ये एटीवी बाइक्स जो है, यहाँ पे ऑल टेरियन व्हीकल्स जो है, और इनके जरिए से ये जो यहाँ पे तिरंगा रैली है उसको यहाँ टंगमर्ग से बाज़ाब्ता तौर पे ये गुलमर्ग पहुंचेगी, और काफी तादाद में नौजवान जो है तिरंगा लिए हुए इन एटीवी बाइक्स पे यानी गुलमर्ग की तरफ रवाना दवा है। और इस तरह यहाँ इस फेस्टिवल की अगर हम बात करें, और ज्यादातर टूरिज्म को बढ़ावे के लिए, टूरिज्म के फरोग के लिए गुलमर्ग में हर साल ये इस तरह के फेस्टिवल मुनक़िद किए जाते हैं, ताकि एक तो मुकामी लोगों को रोजगार के वसाइल बढ़ेंगे, और दूसरा सयाहत जो है मुल्क भर के सयाह, दुनिया भर के सयाह, उनको ज्यादा से ज्यादा गुलमर्ग की तरफ रागिब किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। आर्ट और फनकारों को फरोग देने के लिए खास एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। कश्मीर के सिटी मॉल में सेकंड लाइव्स आर्ट गिल्ड के जेर एहतमाम इस आर्ट एग्जीबिशन रिफ्लेक्शंस का इनेकाद किया गया। ये अपनी नौइयत की पहली खास आर्ट एग्जीबिशन है। इस एग्जीबिशन में दीपा सोनी, डॉक्टर जहांगीर असलम, इफ्तिखार वानी, राहिला यासीन, समरीन नबी, इरफान रफीकी जैसे नामवर आर्टिस्ट ने अपनी फनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। सयाहत और सकाफत के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद इस मौके पर मेहमान खुसूसी रहे, और उन्होंने कहा कि इस किस्म की एग्जीबिशंस इसलिए बेहद जरूरी है कि फन के हवाले से कश्मीर की एक शानदार तारीख रही है। बहैसियत माशरा हमारा फर्ज है कि हम ऐसी एग्जीबिशंस में शिरकत करें ताकि आर्ट और फन से जुड़े फनकारों की हौसला अफजाई हो सके। Today's event, which was an exhibition of the art by self-taught artists, is absolutely commendable. I would like to congratulate the organizers of this event, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है उन यंगस्टर्स को और उन लोगों को जो आर्ट के कॉन्सर्स हैं. You see that there is such heavy participation. Everybody is getting attracted to this. People are walking around and then seeing this day in, day out. People are coming in, making sure that they are appreciating these artists. I think as a society, it is extremely important that we give these kind of opportunities to our artists. And like I said, Jammu and Kashmir has a very, very long history. Our recorded history goes back to almost 4,000 years. And therefore it is important that we recognize that we need to promote this. We need to make sure that our heritage, cultural heritage, legacy is kept alive. And therefore this is a step in that direction. The government on its part will make sure that whatever needs to be done will be done, and we will ensure from the Department of Tourism and the Department of Culture that इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा. ये प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे आर्टिस्ट को, एंड अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो की जाएंगी. यू आर राइट दैट दिस इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. और आप आम लोगों को इसमें पार्टिसिपेशन देखते हैं, कितनी हैवी पार्टिसिपेशन है आम लोगों की, जनरल पब्लिक की, who are probably craving for activities like this. Correct. And I think it is about time that we provide all these activities and give platforms to all these young artists who are actually self-taught. So my commendations to all of them for having organized this. So I have displayed mostly some scenic landscape paintings or architectural paintings. Apart from that, Kashmiri heritage samovar I have displayed here. तो ये सब आप देख सकते हैं. बहुत ज़रूरी है. वी विल कम टू नो कि आप कैसा आर्ट बनाते हो. यू विल कनेक्ट टू पीपल एंड पीपल विल सी योर आर्ट बाय फेस, नॉट ऑन वर्चुअल मीडिया. वो भी ज़रूरी है, बट ऐसे एग्जिबिशंस एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. और कोई पर्टिकुलर फॉर्म है जो आप यूज़ करते हैं अपनी पेंटिंग्स में, या आई बिलीव इन वर्सटाइलिटी. और जो चीज़ आपके दिल को छुए एंड यू फील लाइक आई शुड ड्रॉ इट, गो फॉर इट. यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए.
डीजीपी दिलबाग सिंह ने पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को सख्त पैगाम दिया। इन्होंने किश्तवाड़ दौरे के दौरान कहा कि पीओके में मौजूद दहशतगर्द हमारी पहुंच से बाहर नहीं, हम पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बना सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी को हवा देने वालों की खैर नहीं। दफा 370 वापस मिलने की उम्मीद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, इंडिया अलायंस की जीत को लेकर हैं पुरउम्मीद। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर मरहूम को पेश किया गया खिराज अकीदत। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी का बयान, आर्टिकल 370 की बहाली पर कोई भी फैसला होगा, पार्टी को काबिल कबूल। G20 ममालिक के हिंदुस्तान की सदारत पर किया खुशी का इजहार। आइंदा अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन में किसी भी प्री पोल इत्तेहाद को किया मुस्तरद। कांग्रेस ने गोल मार्केट उधमपुर में किया एहतजाजी मुजाहरा। महकमे PHE और PDD के खिलाफ किया बरहमी का इजहार। बिजली और पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने का किया मुतालबा। मुतल्लिका महकमों की अदम तवज्जुही से हैं उधमपुर के लोग परेशान। जम्मू कश्मीर देही सफाई सुथराई के डायरेक्टर ने किया राजौरी का दौरा। स्वच्छ भारत मिशन के निफाज से मुतालिक लिया जायजा। RDD और PRI अफसरान के साथ की मीटिंग तलब। सुरानो पंचायत में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और बॉलिंग मशीन यूनिट का किया इफ्तिताह। और ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे। आलमी फर्स्ट एड डे के मौके पर श्रीनगर में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। फायरमैन को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद से मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। इस मौके पर मकामी और दुनिया भर की तंजीमों ने लोगों को फर्स्ट एड की महारत की अहमियत और हंगामी हालात यानी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में उनके किरदार के बारे में आगाह किया। मीडिया और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद यानी फर्स्ट एड की अहमियत और हंगामी इक़दामात पर यहाँ खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। का मतलब ही होता है कि इमीडिएट और इमरजेंट सिचुएशन में हम कैसे फर्स्ट एड की कार्रवाई करें, कैसे हम जो स्किल है मेडिकल जो टर्म्स में हम बात करें तो उसको हम प्रोवाइड करके कैसे हम कोई मेजर इंजरी को रोक सकें और लाइफ को सेव कर सकें जो अफेक्टेड आदमी है। मेरी अपनी एक तजुर्बा भी है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि फर्स्ट एड के प्रॉपर टाइम पर नहीं देने के कारण हमने अपने आँख के सामने बेसिकली खोते हुए देखा है लोगों को। तो आज के इस दिन का इम्पोर्टेंस का हम चाह रहे थे कि मैक्सिमम इस्तेमाल अपने डिपार्टमेंट के लिए कर सकें और उसी को माइंड में रख के आज ऑर्गेनाइज करा। हमने अपने दोनों हेडक्वार्टर, प्रोविंशियल हेडक्वार्टर जम्मू और श्रीनगर में करीब 700 हमारे जो फायर इमरजेंसी सर्विसेज के जवान और ऑफिसर्स हैं जो इसमें शिरकत कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, और हमारी मेडिकल जो डिपार्टमेंट है, मेडिकल एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनके हेल्प से उनके डॉक्टर्स की टीम है और हमारे मेडिकल ऑफिसर ये सब मिल करके उनको ट्रेन किया जा रहा है। बानेहाल से 7 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भुरनाड़ डोलगाम में 214 गरीब बच्चे जेर तालीम हैं और बच्चों की तालीम फौज की तरफ से दिए गए एक टेंट और टीन के एक शेड से चल रही है। 4 दीवारी न होने से पूरे गांव का रास्ता स्कूल के अहाते से होकर गुजरता है और इस शाहराहे आम की वजह से तालीमी सरगर्मियां असरअंदाज होना मामूल है। मिडिल स्कूल भुरनाड़ की खस्ताहाल इमारत में 4 कमरे ही मौजूद हैं, जिनमें एक ही कमरा बच्चों के लिए है। बाकी 3 कमरों में ICT लैब, किंडरगार्टन और स्कूल का दफ्तर है। यहां जेर तालीम 214 गरीब बच्चों की तालीम फौज के एक टेंट, टीन के शेड और खुले आसमान के नीचे हो रही है। बारिशों के दौरान तालीमी सिलसिला मुतासिर हो जाता है। मकामी लोगों ने बताया 214 बच्चों के लिए 4 ही टीचर तैनात हैं, जबकि यहां मजीद 3 टीचरों की अशद जरूरत है। मकामी लोगों ने तालीमी हुक्काम से अपील की है कि वो स्कूल इमारत की तामीर और असातिज़ा की तैनाती अमल में लाएं ताकि बच्चों की मुस्तकबिल कोई आंच न आए। इस सिलसिले में जोनल प्लानिंग ऑफिसर बानेहाल रुबीना अहमद भट्ट ने न्यूज़ 18 को बताया कि स्कूल की नई इमारत के लिए जमीन दस्तयाब न होने की वजह से इमारत की तामीर में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा स्कूल इमारत के लिए जमीन हासिल करने की कोशिश की जा रही है और हमारे स्कूल में बहुत प्रॉब्लम है।
हमारी स्कूल बिल्डिंग आनी चाहिए यहाँ पर। ना हमें ग्राउंड है, ना हमें कुछ भी नहीं। हमें 8 क्लास है, हमें 4 टीचर है और हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। बारिश में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। सर 2 कमरे सर, उसमें एक में एसिड लीक है सर। एक कमरा है उसमें 214 लड़के से कैसे बैठ सकते हैं सर। ग्राउंड भी नहीं है सर, खेलने के लिए ग्राउंड भी नहीं है सर। 8 क्लास सर, एक क्लास अंदर बैठ सर, 2 क्लास अंदर बैठते सर, एक क्लास इधर सर, बाकी बाहर बैठते। आपने कंडीशन देखी कि इसमें ग्राउंड है, कमरा एक है, बाकी जितने भी क्लासें हैं अब बाहर धूप में पड़ रही हैं। ये फौज की तरफ से इनको टेंट मिला, हर साल देते हैं, पिछले साल भी दिया है, तो इसमें बच्चा गुजारा करते हैं। और यहाँ के गरीब आवाम हैं जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनके पास इतनी ताकत भी नहीं है कि वो अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दें। लेकिन ये गरीब बच्चों के, गरीब बापों के मतलब औलाद बच्चे हैं जो है स्कूल में एडमिशन। बच्चों की तादाद जो यहाँ स्कूल में 200-250 से ऊपर है, लेकिन रहने के लिए क्लास में कोई क्लास कमरा नहीं है, रूम नहीं है कहीं। हमारा जो स्कूल है तकरीबन 30-40 साल पहले ये बिल्डिंग बनी, इसको हम सरकार को कहना चाहते हैं कि इसको डिसमेंटल कर दिया जाए, और जिससे यहाँ पे 8 क्लासें होते सर, तो एक क्लासरूम में यहाँ खेतों में बच्चे हैं। और यहाँ आपने देखा कि इंडियन आर्मी ने जो हमें एक टेंट अभी दिया है, कुछ चंद महीने तक देते और बाद में वापस लेते। तो सर बहुत यानी सबसे बहुत जो हमारी परेशानी है बच्चों के लिए सर, हमें यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो अवेलेबल नहीं है कि हमारे बच्चे सफ़र करें। और उसके बाद सर स्टाफ की भी बहुत कमी है सर। इसके लिए भी हमने जेडीओ साहब से बार इल्तिजा की, बार इंफॉर्मेशन दी, हम गए, फ़ोन पे बात हुई, लेकिन सर हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी। तो इससे पहले भी वहाँ पर 1-2 बार जो अमाउंट आया था वो वापस चला गया, ड्यू टू लैंड जो नहीं है वहाँ पर। तो अब इंशाल्लाह अभी हमने एक लेटर डाली हुई थी कि हर एक को बताया था कि कहाँ पर कौन सी कमी है, तो हम DPR बना रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन वहाँ पर उस स्कूल की तो यही प्रॉब्लम है कि वहाँ पर जमीन अवेलेबल नहीं है सर। वहाँ तो मैं ऐसे खुद भी चली गई वहाँ पर, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है। गाँव का रास्ता भी वहाँ से है और ग्राउंड बिल्कुल कम है वहाँ पर। लेकिन हम जो कंसर्न हेडमास्टर है उनसे हम ये कर देंगे, उनको रेजोल्यूशन डालनी पड़ेगी जिसके थ्रू हम अपने हायर अथॉरिटी को ये अप्लाई कर देंगे, तो उनकी ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह हम हल करेंगे। नाज़रीन, वो दौर अब खत्म हुआ जब श्रीनगर में खवातीन को जबरदस्त रुकावटों का सामना करना पड़ता था या घर में सिर्फ बैठकर सिर्फ घर का काम ही अंजाम देना पड़ता था। अब ये रुझान बदल गया है। खासतौर पर आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर में खवातीन की अक्सरियत स्टार्टअप्स और कारोबार की तरफ तेजी से माइल हो रही है। मालियाती तौर पर खुद मुख्तार होने के लिए हुकूमत जम्मू कश्मीर की जानिब से स्टार्टअप्स खासतौर पर खवातीन एंटरप्रेन्योर्स को फायदा पहुंचाने के लिए स्कीमों का एक खास सिलसिला शुरू किया गया है। वो अब ऐसे मौके तलाश कर रहे हैं जो उन्हें मर्दों के साथ बराबरी की बुनियाद पर कायम कर सके। Shri Shringla, Chief Coordinator of the G20. They will make brief opening statements, after which we'll open the floor for questions. Please note that we may not be able to accommodate all your questions given the time limit, but I would request now, sir, if you would like to take the floor first. Thank you. Thank you very much. Friends from the media, it is a great pleasure for all of us to speak to you, even as the G20 summit deliberations continue. You may be aware that at the start of the second session, the summit has adopted the G20 New Delhi Leaders Declaration. What I would like to do is to give you an overarching perspective of India's G20 presidency. Thereafter, I would request my colleague, Finance Minister Nirmala Sitharaman, to speak about the key outcomes from the finance track. The Indian G20 Sherpa, Amitabh Kant, will then similarly speak on the results of the Sherpa track. We would thereafter be very glad to respond to your questions and comments. The message of our presidency, as you are all aware, is that we are one earth, one family, and we share one future. This draws the entire proceedings of the New Delhi summit are in fact organized accordingly, with 3 sessions devoted
to each aspect of this theme. Now, reflecting this approach, we have consciously sought to make this G20 as inclusive and broad-based as possible. It is witnessing the participation of its 20 member states, 9 invitee nations, and 14 international organizations. It is a matter of particular satisfaction for us that the African Union has this morning become a permanent member of the G20, that too during the Indian presidency. This is in keeping with the priority that we attach to addressing the urgent concerns of the Global South. You would recall that at the beginning of our presidency, at Prime Minister Modi's initiative, 125 nations were consulted to express the voice of the Global South. In terms of its organization and program, the Indian presidency, if I may say so, has been exceptional. Events have been spread across 60 cities, which are truly across the length and breadth of India. There has been a popular participation and a societal involvement of an extraordinary degree. The interest in G20 proceedings have been particularly strong among our youth. It has been an opportunity to showcase our culture, traditions, and heritage as well. The G20 has contributed to making India world ready and the world India ready. The declaration that the leaders have agreed on today focuses on promoting strong, sustainable, balanced, and inclusive growth. It seeks to accelerate progress on SDGs and has come up with an action plan accordingly. It envisages a green development pact for a sustainable future. It endorses high-level principles on lifestyle for sustainable development, voluntary principles on hydrogen, the Chennai principles for a sustainable and resilient blue economy, and the Deccan principles on food security and nutrition, among others. The transformative and inclusive role of technology has been highlighted with a focus on digital public infrastructure. The Indian presidency's proposal of a One Future Alliance has also been noted. The G20 has reaffirmed the fundamental importance of gender equality and committed to halve the digital gender gap by 2030. Recognizing that the post-pandemic world order must necessarily be different from the world before it, the leaders have also emphasized the need to reinvigorate multilateralism and reform international financial institutions. This is particularly relevant to managing global debt vulnerabilities. So, as you can see, there have been many far-reaching and very consequential policies and decisions that have been agreed upon today. Keeping all that in mind, I would, at this stage, request Finance Minister to highlight the key issues from the finance track. Thank you, Jaishankarji. As was said by the External Affairs Minister, under the guidance of Honorable Prime Minister, India's G20 presidency has worked for the theme One Earth, One Family, One Future. So today we are in a position to adopt, through the finance track, people-centric, action-oriented and far-sighted approach, and as a result of which several outcomes of the finance track will certainly reflect these objectives with which we started the negotiations. It has been very clear in our mind that we should ensure that no one is left behind in our pursuit of global solutions. So we have endeavored to support countries, especially those from the Global South, to be an integral part of the global decision-making process.
The G20, as you all know, is a very diverse group. Each country is at different milestones of economic development, and their trajectory is also very different. Path forward for all. Many action-oriented outcomes of this presidency contain comprehensive strategies that cater to the unique needs and aspirations of all developing nations. We assumed the presidency at a challenging time of geopolitical tension. The Indian presidency has worked to ensure that these divergences don't overshadow the core developmental outcomes or concerns of the global community that demand collaborative solutions. So today, as I look back at the 10 months of Indian presidency, I am left with gratitude and satisfaction. I can confidently state that the Indian G20 presidency has walked the talk. Now, let me share with you just some of the key achievements of the Indian presidency, the finance track. First one is the outcomes which are focused on strengthening the MDBs to address shared global challenges of the 21st century. So under this strengthening MDBs, there are 4 key highlights that I'd like to bring to your notice. The first one is agreement on the need for a better, bigger, and more effective MDBs. It is so necessary to have better, bigger, and more effective MDBs because the developmental demands from all across the globe is so high, these institutions will have to be better and bigger. This is also going to contribute to enhancing representation and voice of developing countries in the decision making. The second under the MDBs, strengthening of MDBs, is the G20 Independent Expert Group on strengthening MDBs, and this was established and it has submitted its volume 1. The first report, their report consists of 2 volumes. The first volume has already been submitted. The report recommends a triple agenda that dovetails with the call for the bigger, better, and more effective MDBs. The third point in strengthening MDBs is the agreement to collectively work towards boosting World Bank's financing capacity. Here the options will be explored that will deliver a powerful boost to the IBRD headroom to support low-income and middle-income countries. And the fourth, endorsement for the G20 roadmap for implementation of the recommendations of an independent panel on capital adequacy framework of the MDBs. So the CAF recommendations are focused on enabling MDBs to use their existing resources effectively. The roadmap estimates, this is going to be of interest for the media, the roadmap estimates that implementation of the CAF and the measures thereby will potentially yield additional lending headroom of approximately $200 billion over the next decade. So through these achievements, India has harnessed the opportunity provided by the G20 presidency to effectively articulate and embed the priorities of the global south in the larger global conversation on the MDB reforms. I move to the second, laying the building blocks for a globally coordinated and comprehensive policy and regulatory framework for crypto assets. The global push for clearer policies on crypto assets has gained momentum under the Indian presidency, and a global consensus is emerging on the same. The presidency will support the IMF and the FSB, and FSB is also setting the contours of the regulatory framework for a globally coordinated approach to crypto assets. So the presidency, with the support of IMF and the FSB, is setting these contours. The IMF and FSB synthesis paper, about which I've spoken to the media earlier, including a roadmap. On that, I just want to give my observation.
This synthesis paper delves into how the policy and regulatory frameworks developed by the IMF and the FSB, alongside the other standard-setting bodies, will fit together and interact with each other. This paper is now available in the public domain for all of you all to see. The third one, which I'd like to draw your attention to, is the financial inclusion and productivity gains through digital public infrastructure. India, as you all are aware, through the India Stack, became the first country to develop all three foundational DPIs: the digital identity, the real-time fast payment, and a platform to safely share personal data without compromising privacy. So embedded this concept in the G20 financial inclusion agenda by formulating G20 policy recommendations for advancing financial inclusion and productivity gains through digital public infrastructure. This set of recommendations cover 5 aspects: use of DPIs and accelerating financial inclusion, fostering well-designed DPIs, regulatory and supervisory aspects of DPI, institutional and governance arrangements by DPI, and ensuring customer protection. So DPI has also been integrated into the G20 Financial Inclusion Action Plan, the FIAP, which will run between 2024 and 2026. That's a strong legacy of the Indian presidency. We also assume the co-chair of the Global Partnership for Financial Inclusion. The implementation of the Financial Inclusion Action Plan, as well as the policy recommendations on DPI, will remain as areas that will continue to be heard across the G20 forum. So, the fourth one, which I'd like to highlight, is the debt resolution under the common framework and also beyond the common framework. Since its establishment in 2021, only Chad as a country has had its debt restructured. The others have been waiting. So since India took over the G20 presidency, good progress has been made in the ongoing country cases under the common framework of debt treatment, and the 3 countries in that are Zambia, Ghana, and Ethiopia. We've also succeeded in using the G20 platform to also put in place a coordinated mechanism to address the debt situation of Sri Lanka, which is outside of the common framework. So G20 will continue discussing the policy-related issues linked to the implementation of the common framework and make periodically such appropriate recommendations. The launch of the Global Sovereign Debt Roundtable, which is co-chaired by IMF, the World Bank, and also the G20 presidency, to enhance the conversation among the various stakeholders and address current shortcomings in the debt restructuring process. That has now become an institution which is actually acting as a catalytic agent in getting resolutions done faster. The fifth point under the finance track, which I'd like to bring to your notice, is the financing of cities of tomorrow. Key concerns of the low-income countries and emerging markets is always been to mobilize resources for financing sustainable, resilient, and also inclusive cities of tomorrow. The G20 principles, which are issued for financing cities of tomorrow to promote effective and efficient use of financial resources to support urban development that is socially inclusive, environmentally responsible, and economically sustainable, are now all under the framework of the principles which have been used. The MDBs and the development financial institutions can use these principles in their financing plans for urban infrastructure. The sixth, which I'd like to quickly draw your attention, is the 2-pillar solution on global taxation, the international taxation.
we made substantial progress in the two-pillar solution, and the work has also happened on the exchange of information on immovable property transactions between countries. There is a launch of the pilot program of the South Asia Academy in India for tax and financial crime investigation in collaboration with the OECD. The seventh, on which I'll elaborate, is mechanism to support the timely and adequate mobilization of resources for climate finance. Till date, the conversation was focused on calling on developed countries to say, where is that $100 billion US dollars, which didn't come. But Indian presidency adopted an action-oriented approach, and the G20 explored mechanisms that can support timely and adequate mobilization of resources for climate finance, facilitating access to multilateral climate funds and enhancing their leverage and ability to mobilize private capital has also been our focus. Special focus again on development, demonstration, deployment of green and low carbon technologies. Now the list of outcomes, I've pointed out 7, just 3 more which I'll not go into the detail, but you can take it as enough has been done on that. I'll also put it out for your consideration. Scaling up sustainable finance for social sectors, health and education. Technical assistance for capacity building. Then global conversation on transition policies, especially to include range of options, both on pricing and non-pricing. And the third one, enhancing finance health collaboration so as to cover many other work streams as well. So I listed out 7, elaborated on them, 3 others which have not elaborated, but on all of them, substantial progress and outcomes have been achieved. India's received tremendous support from the G20 members across the table. The outcomes of the Indian presidency are a testimony to India's commitment to multilateralism and for international cooperation. We assure the upcoming Brazilian presidency of our strong support and to continue the momentum on key issues of global importance. I now hand over back to Minister Jaishankar. Thank you, Nirmala ji. May I now request G20 Sherpa Amitabh Kant to bring out the major outcomes from the Sherpa track. Thank you, Minister. So first of all, when we started India's presidency, the Prime Minister had said that India's presidency must be inclusive, it must be decisive, it must be ambitious, and it must be action-oriented. The New Delhi Leaders' Declaration has 83 paras in all. All 83 paras have 100% consensus across all countries. There are 8 paras on the geopolitical issue which is entitled Planet, People, Peace and Prosperity. All those 8 paras have 100% acceptance. All countries have unanimously supported the New Delhi Leaders' Declaration. This is one declaration without a single footnote and without any chair's summary. This is a complete statement with 100% unanimity. This demonstrates both the Prime Minister's and India's great ability to bring all developing countries, all emerging markets, all developed countries, China, Russia, everybody together on the same table and bring consensus. Secondly, this has been the most ambitious तो G20 प्रेस ब्रीफिंग लीडर्स डिक्लेरेशन पर खास बयान लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। फिलहाल के लिए नमस्कार।